Hello and welcome to the in-house debate. I'm Navrun Goswami. Well, parts of Assam are witnessing contrasting scenarios. While there is celebration on one side, protests broke out on Saturday in some other parts after the much anticipated report of the group of ministers recommending scheduled tribe status for 6 indigenous communities was tabled in the State Assembly on the final day of the winter session. That was on November 29th. Protests broke out that day in the borough heartland even before the GOM report was tabled in the assembly. Clearly, there was apprehension, and if we go by what the BTC chief Hagrama Mohilari has believes or has said, there was instigation as far as the protests and the storming of the BTC secretariat and the assembly is concerned. Whatever it be, things are under control now, but there seems to be still a little bit of confusion among the existing ST communities as to how the fresh move will affect them, if at all. Now, the GOM report recommended a 3-tier classification of scheduled tribes, that is ST Plains, ST Hills, these are the 2 existing ones, and ST Valley. While the Moran, Motak and Koch Rajbangshi community of undivided Gwalpara has been recommended for the ST Plains category, Ahoms, Sutia, T tribes and Adivasi and Koch Rajbangshi outside undivided Gwalpara district have been recommended for the ST Valley category. The ST Valley category will have a separate reservation quota with distinct rosters and vacancy registers for all the state government recruitment and educational institutions, and existing ST quotas will remain protected. This is what the report recommends, but still there have been protests, there is concern, there is confusion, there is apprehension. I am being joined in the in-house debate today by Onita Moja, my colleague and associate editor. Also with me is Kavita Upadhyay. Kavita is our senior anchor. Welcome both of you. Before we go ahead with the discussion, let's listen into what Chief Minister Hemant Biswa Sharma had to say about the protests that broke out in Kokrajhar on Saturday. এটা আপোনালোকে সিধা কথাত ধৰক প্ৰতিবেদন দাখিল হৈছে 7টাত আন্দোলন হৈছে 3টাত তাৰ মানে প্ৰতিবেদনখন নপঢ়াকৈ আন্দোলন হৈছিল আৰু পঢ়িলে তাত কোনেও বেয়া পাবলগীয়া একো নাই সকলোৰে কাৰণে আমি যাতে সকলো জাতি উপজাতি আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সুন্দৰ প্ৰতিবেদন এখন দিছো সকলোৱে পঢ়িলে গম পাব যে ইয়াত কাকো অন্যায় কৰা হোৱা নাই সকলোকে ন্যায় কৰা হৈছে. So, interest of the existing STs have not been harmed, and it's for the benefit of all indigenous communities. That's what Chief Minister Hemant Biswa Sharma says. But the situation had turned really ugly in Kokrajhar on Saturday. In fact, briefing media persons yesterday, BTC Chief Hagrama Mohilari alleged and accused the UPPL and the APSU of creating ruckus by instigating youth, students, getting them out of the classrooms to the streets and make them storm into the Assembly Secretariat, the Secretariat premises, BTC Secretariat and Assembly premises. This, Hagrama said, was not done, and he also made a big allegation that the protesters instigated again by UPPL and APSU were actually targeting him. Let's listen in. খোর ভাঙাই দে আর মোক মারিব বিচাৰিছে নাকি যোৱাকালি একবাৰ হাত দিব দিয়ক না একবাৰ হাত দিব দিয়ক কোন আপসু নেতা কোন ইউপিপিএল নেতা মোক মাৰিব কাৰণে বিচাৰি আছে বোলে মোক মাৰিব কাৰণে বিচাৰি আছে আপসু নেতা আৰু ইউপিপিএল নেতাই সাহস আছে আগুৱাই আহক না আজিৰ দিনত 6 জনগোষ্ঠী এছটি কৰণৰ ক্ষেত্ৰত কাক কি কৰিব লাগে কাক কি পৰ্যায়ত ৰাখিব লাগে এইবিলাক ডিসিশন দিয়া আপসু লিডাৰ আৰু ইউপিপিএল লিডাৰ. That's typical Hagrama style, isn't it? Challenging, daring anyone to touch him if they have the guts. But, well, why did it come to this? Could the situation have been avoided? And, of course, things are very much under control now. And the CM was right. This happened. The protests actually broke out in the afternoon
rather around 2:30 to 3 p.m., much before, hours before the report was even tabled. So yes, there was probably confusion, apprehension. We are not getting into the allegations here of who has instigated this. Hagrama Mohidari seems to be very confident there that the UPPL and the APSU, it's a deliberate attempt to create a law and order situation. The UPPL could not digest its loss in the recently held BTC elections, and hence they are resorting to these kind of cheap theatrics. Absolutely. Number one, now here what must have happened is some kind of lack of communication or some kind of miscommunication there, and because if we look at what the recommendations are, several of the recommendations that the group of ministers have made in the report, which is now with the central government after being tabled in the assembly, there, like you have mentioned in your introductory remarks as well, time and again the GOM, which was made up of the group of ministers from Assam, they have reiterated that the existing quotas or the privileges and rights being enjoyed by the ST communities, the communities who have got the ST status, they will in every which way be protected. And now, after the protests and everything, the Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma has again set up a 3-member committee comprising of Keshav Mahanta, Minister Ranush Pegu and Piyush Hazarika. They will have a meeting, they will have a consultation with the Delegation of Coordination Committee of Tribal Organizations in Assam. This is the apex body representing some of the tribal, the communities. Which is leading the existing opposition. Yes. So, and in fact, the Chief Minister has gone to the extent of saying that after this particular meeting, in case they need more clarity, they need to understand the recommendations further, and whatever their fears and concerns are, Chief Minister is willing to himself go ahead and meet the representatives of the communities as well as this particular organization. So, definitely looking at how things happened just 2 days ago, looks like there was some kind of miscommunication. Absolutely. But the government is confident. Absolutely. The government is confident that whatever step it is taken, whatever recommendation has been made is in the interest of all the communities. Yes. Hence, it is open to discussion, as you just said, open to talks with all the, in fact, yesterday also, Chief Minister Sharma said that he had at least had 10 rounds of talks with the tribal Janagoshti before the recommendations were made. So it was not that this was made without consultation with the groups and hastily. No, that was never the case. कविता क्या लगता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट की जो डिसीजन लिया है, और इसमें क्योंकि ओपन है कि हम तैयार हैं, आइए बात करते हैं, ये देखिए अगर कोई इशू है. इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर कविता, कांग्रेस का जो स्टैंड था, कांग्रेस ने जो एक गौरव गोगोई का एक पोस्ट था एक्स में जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कमेंट किया, कांग्रेस इज ऑल दिस टाइम ऑफ कोर्स बैकिंग दिस एसटी स्टेटस. नाउ अब जब ये हो गया, ये रिकमेंडेशन हो गया, तो अब कांग्रेस करेगी गवर्नमेंट जो है एग्जिस्टिंग एसटी और ये नए इसमें एक डिविजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस ने यू टर्न लिया है नवरुण. कल तक हितों की रक्षा की बात कर रही थी कांग्रेस, लेकिन अब कह रही है कि जो जिनका अधिकार छिनेगा उनके प्रति उसकी हमदर्दी है. ये पूरा सेंसिटिव इशू है, ये पूरा जो मामला है ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है. लोगों की भावनाओं, लोगों के भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा है. दशकों लंबित मांग रही है छठी अनुसूची का, जनजातिकरण का, और दूसरी सरकारों ने काफ़ी आश्वासन किए. मौजूदा हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ये पूरा करने जा रही है, और जब फ्रंट फुट पर आकर सीएम बार बार कह रहे हैं कि किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, तो ऐसे में भरोसा रखना होगा सीएम शर्मा पर, क्योंकि बार बार वो लगातार वो बयान दे रहे हैं और फ्रंट फुट पर आकर बयान दे रहे हैं. और जैसा कि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस कल तक कह रही थी कि इन 6 जनजातियों को जनजातिकरण नहीं मिल रहा, उनके हितों की रक्षा की बात हो रही थी. जैसे ही बीजेपी सरकार ने कोई फैसला लिया, ये बड़ा फैसला लिया, उसके बाद लगातार यू टर्न हो गया कांग्रेस की तरफ से. अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो है मौजूदा आदिवासी कहीं उनके अधिकार ना छिन जाए. Absolutely. We also have our कोकराझार correspondent Mizink query. Mizink, इस वक्त कोकराझार में सिचुएशन कैसा है, क्या चीज़ें पूरी तरह से नॉर्मल हैं? हमने शनिवार को जो देखा वायलेंस हो, उसके बाद ऑफ कोर्स कल पीसफुल था, आज भी कोई, अभी ओवरऑल जो है माहौल कैसा है?
देखिए नवरुण, अभी जो 29 का जो शाम का सिचुएशन उसको देखते हुए अभी कल भी जो 30 तारीख को बहुत शांत था, और आज भी बहुत शांतिपूर्ण से जो है कि बीटीसी का फर्स्ट विंटर बजट सीजन चल रहा है, और लगातार ये बजट सीजन 3 तारीख तक चलेगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सेक्शन 163 धारा लगा दी गई है, और यहाँ पे काफी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। और हालांकि जो प्रदर्शनकारी छात्र था बॉर्डर यूनिवर्सिटी से ट्राइबल छात्र जो प्रदर्शन कर रहा था, जो असम के कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहा था, और अभी फिलहाल जो अंडर सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल में है, और अभी काफी शांत देखने को मिला है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन्होंने 24 आवर्स का टाइम दिया था असम के सीएम को, और बीटीसी के सीएम हाग्रामा मोहिदारी को, और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ असम को। लेकिन अभी देखा जाए तो कोई भी धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह का जो अहिंसा का क्योंकि और शांतिपूर्ण क्योंकि भी अभी मिजिंग मिजिंग प्रोटेस्ट बीटीसी में अभी असेंबली चलते हुए दिखाई दिया है। जो सैटरडे का प्रोटेस्ट था वो उस वक्त शुरू हुआ जब ये जो रिपोर्ट है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिपोर्ट है वो टेबल भी नहीं हुआ था, टेबल भी नहीं हुआ था, उससे पहले प्रोटेस्ट हुआ। सो हग्रामा मोहिलारी जो है यूपीपीएल और आपसू को ब्लेम कर रहे हैं। क्या कोई अरेस्ट कुछ हुआ है इस वैंडलिज्म और वायलेंस के रिलेटेड अभी तक? फिलहाल अभी तक किसी भी छात्र का अरेस्ट नहीं हुआ है, और जैसा कि आपने कहा और हंगामा मोहिलरी खुद कहा, जो आपसू और जो यूपीपीएल का इसमें हाथ है। लेकिन हालांकि अभी तक किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इसमें कोई आपसू का इन्वॉल्व होना और यूपीपीएल का इन्वॉल्व होना। लेकिन अभी लगातार सीसी कैमरा में अभी बीसीसीएल के जो अंदर थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हुआ था उसमें सीसी कैमरा में अभी चेक हो रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। सारी जो तोड़फोड़ किया गया सामान है वो अभी एसपी की तरफ से जब्त किया गया है, और अभी फोरेंसिक के लिए ले जाया जाएगा और सीसी कैमरा को चेक किया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व था उसको देखा जाएगा। और देखा जाए तो अभी जो जैसा कि छात्रों ने निगोशिएशन किया था डीसी का साथ, हम सौदा करने के लिए तैयार है हग्रामा मोहिलारी के बिना भी। लेकिन ये मेमोरेंडम जो छात्रों का था वो हग्रामा मोहिलारी तक पहुंचाना है डीसी को, और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा तक पहुंचाना है, और ट्राइबल अफेयर्स ऑफ असम मिनिस्टर उसके पास पहुंचाना है। और एक बात का डिमांड किया था और प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से जो है कि इस जो घटना है ये भूल में हो गया और काफी आग्रहित में ये हो गया, इसके कारण ये जो तोड़फोड़ किया गया था छात्रों की तरफ से, इसमें कोई किसी के ऊपर केस नहीं होना चाहिए और किसी के जी ऊपर देखिए, किसी भी तरह का जो बिल्कुल धारा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इवन सब छात्र है। इवन ऐसा करके डिमांड किया था। और आपसू का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग दिया है। आपसू का प्रेसिडेंट स्पष्ट किया है इसमें कोई आपसू का हाथ नहीं है। और देखा जाए तो आपसू का प्रेसिडेंट जैसा बयान दिया है उसके हिसाब से आपसू का प्रेसिडेंट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जो सारे जो बीटीआर के अंतर्गत में जितना भी कॉलेज है जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में पड़ता है, उसका कॉलेज का जीएस के लीड में, जैसा कि साइंस कॉलेज में प्रदर्शन हुआ और साइंस कॉलेज का जीएस का लीडरशिप में हुआ, जैसा कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया और रैली भी किया गया, उसमें बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का जो ट्राइबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है उनके लीड में हुआ। और यूबीपीएल की तरफ से भी जो बीटीसी का जो अभी का जो एमसीएलए है तावाई साबरो, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि छात्रों के ऊपर में कोई भी कुछ भी एक्शन लेना नहीं, ठीक नहीं बिल्कुल देखिए होगा। और हग्रामा किसी भी जो मिजिंग आपसू और यूपीपीएल का इसमें मिजिंग हाथ होना, ये डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं होगा। पहले छानबीन होना चाहिए, उसके बाद ही किसी के ऊपर इलिगेशन या दोषी ठहरा सकता है, ये स्पष्ट कर दिया है। मिजिंग लास्टली हग्रामा मोहिलारी ने ये भी एलेज किया है कि यूपीपीएल और आपसू ने उनको भी टारगेट करने का प्लान किया था। इट वाज अ लाइफ दे हैड प्लान्ड अ लाइफ थ्रेट, अ लाइफ अटैक ऑन हिम, उनको भी टारगेट करने का। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। और फिर से ये जो पॉलिटिक्स है बीटीआर में, किसी को लग नहीं रहा था कि इलेक्शंस की इतनी जल्दी ये इतना जो है हेक्टिक पॉलिटिकिंग हो जाएगा, बट अभी असेंबली इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो ये टेम्पो सेट हो गया है फिर से बीपीएफ वर्सेस यूपीपीएल वेरी क्विकली। देखिए नुमारुन, एक बात को
कहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये धरना जो छात्रों ने बोडलैंड यूनिवर्सिटी में लगातार 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चालू रखा था, और लास्टली 29 नवंबर को जब बोडलैंड यूनिवर्सिटी कैंपस से सेक्रेटरी तक गेट तक था उनका धरना, गेट पे ही रोकना था, और गेट पे ही जो उन लोग का धरना प्रदर्शन था वो चालू रहना था। लेकिन किसी ना किसी जो सिक्योरिटी का जो इंसॉर्ट के कारण, लैब्स के कारण वो लोग अंदर घुस गया और काफी माहौल गर्मा गया। और इसी बात को देखते हुए ये घटना 2016 से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्र हाग्रामा मोहिलारी से इतना क्रोधित था, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी छात्र को मालूम है कि 2016 में जब बीपीएफ का गवर्नमेंट था, तब हाग्रामा मोहिलारी ने असेंबली में, बीजीसीएलए के असेंबली में जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसको अन्य जो 6 जनगोष्ठी है जो बीटीआर में रह रहे हैं, जैसा कि कोच राजवंशी, आदिवासी, सांताल आदि जो अन्य से जाति है, जो कम्युनिटी है, जो एसटी डिमांड कर रहे हैं, फिलहाल उन लोगों को एनओसी दिया है। इसको देखते हुए जो प्रदर्शनकारी छात्र है वो हाग्रामा मोहिलारी से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता था, वो एनओसी क्यों दिया गया। और प्रदर्शनकारी छात्र को मानना था कि हाग्रामा मोहिलारी ने उस एनओसी में ऐसा बात का जिक्र नहीं किया कि एग्जिस्टिंग ट्राइबल को कुछ नुकसान किए बिना ये एसटी होना चाहिए, ऐसा लिख के नहीं किया। ये विश्वास रखते हैं छात्र लोग, इसलिए वो प्रदर्शन। Yes, got it. Hagrama Mohilari yesterday again he claimed that the BPF has not had any discussion, or the government has, neither the state nor the center has any discussion with the BPF as far as this issue is concerned. So yes, there's a lot of pressure, we can understand, lot of issues, lot of politics, and with the assembly elections coming up, this definitely will be a topic. ये एक इशू तो रहेगा बीटीआर में, जब तक ये क्लैरिटी पूरा नहीं आता ये इशू बन के रहेगा। साफ है नवरुण, जैसा कि सीएम ने भी कहा, आपने सुना होगा, सीएम ने कहा 29 नवंबर शाम 7 बजे रिपोर्ट पेश हुई विधानसभा में, लेकिन 3 बजे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। और जैसे विरोध प्रदर्शन हुआ, पैटर्न आप देखिए, बाहर से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन छात्र सचिवालय के अंदर गए, वहां तोड़फोड़ की और कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश बांग्लादेश, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही थी, जिस बारे में सीएम बार बार चेता रहे थे। क्या संदेश देने की कोशिश इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। And in fact, उस दिन से पहले ही students had boycotted the exams. So somewhere maybe the district administration did not see this exactly. They should have seen this coming. And also, Nabarun, this particular issue, a similar bill was brought way back ahead of the 2019 Lok Sabha elections. It was presented in the Rajya Sabha. It was stable, but it was never discussed and obviously not passed. Following that particular year, a group of ministers was set up, because it is then that the government had thought that these particular 6 communities, the Taya homes and the Coach Moran Motor, Coach Rajbangsi and all, they should be given the ST status too. Now, since 2019, the GOM was set up, twice again it was reconstituted, and only now that the final recommendations had come. And in fact, if I read out the terms of the group of ministers at that point of time, 2019, it clearly states to determine the quantum of reservation for 6 communities in the state, suggest revised quantum of reservation for OBCs after creation of a new ST category, which has been done now in Assam, and measures ensuring full safeguard to protect the interests, rights and privileges of the existing Exactly what we see in this report. Exactly what we see in this report. Therefore, like we have mentioned earlier also, there seems to be some kind of a miscommunication, or maybe, yes, we totally understand the concerns of the communities. We have seen some similar kind of a thing happening in Manipur. ST status, being discussed. It's a very sensitive issue. Absolutely. And we then saw what the happened. flare Of up. course, things are not such in Assam. Yes. Things are under control because the government here is very communicative, and everything is in black and white. And here too, Assam Chief Minister promptly setting up the 3-member ministers committee yet again, and
he himself offering कि मैं भी तैयार हूँ अगर कोई और क्लैरिटी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी एप्रीहेंशन है, he is there to clarify everything. जी, 2026 का विधानसभा चुनाव है, जाहिर तौर पर विपक्ष राजनीति करने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है तो कम से कम इसे लेकर इतने बड़े पैमाने पर राजनीति ना हो, राजनीति करे बट इसको लेके कोई अफवाह ना हो, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, कंफ्यूजन ना हो. There is always room. You don't have to agree to everything that is there in the report. Opposition और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के पास कोई बेहतर विकल्प है तो सामने लाए, सामने लाए, इस पर चर्चा होगी. It will take at least another 8 to 10 days इसको सेंटर को भेजने के लिए रिपोर्ट. टाइमलाइन नहीं है कहाँ. अगर जरूरत पड़े तो और 48 आवर्स एक्सटेंड कर देंगे. अगर गौरव गोगोई और कांग्रेस के पास इससे कोई बेटर प्लान है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम, if it's anyone, if somebody has a better plan, they should recommend. Now, as per reports, this structure will allow reservation in Parliament, the Legislative Assembly, and local bodies will be reorganized without reducing the current entitlements of the ST plains and ST hills. However, to achieve this, the Parliament must enact a special threefold reservation statutory endorsement. तो ऐसे में अगर ST वैली आ रहा है तो जो कोटा है ओबीसी का 27%, क्या उसे कम किया जाएगा और जो ST का कोटा है क्या उसे बढ़ाया जाएगा, क्या संशोधन की जरूरत होगी संविधान में? स्टेट में जो है अभी भी द एंटायर रिपोर्ट वी हैव नॉट एक्सेस्ड द निटिग्रिटीज, पर स्टेट में जो है ऑब्वियसली देखिए ST के अगर नंबर्स बढ़ेंगे तो सीट्स भी बढ़ेंगे हर जगह, सो दैट विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली. तो स्टेट का जो है, स्टेट में ऐसा कोई इशू नहीं है. कहीं से जैसे कि कहा है कि एग्जिस्टिंग जो राइट्स हैं वो सब इंटैक्ट रहेंगे, कि नंबर्स वैसे ही बढ़ेंगे, यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे. Of course, for central it's a different story that we know and nobody is even getting into that. But state का जो एक assurance है कि existing उसको touch नहीं किया जाएगा. ST वैली ये एक separate category है, इसके लिए अलग से provisions रहेंगे. अब details जो उभर के ऐसे ये कमिटी है, जब डिस्कशंस होंगे, जैसे कि when they talk with the coordinating committee of tribal organizations, more clarity will come into this issue, and I'm sure in the next couple of weeks things will be much put in a broader perspective. Till that time, of course, the confusion and apprehension will persist. चीजें जितनी जल्दी क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों में असमंजस की स्थिति है, तो उन्हें वो क्लैरिटी आनी चाहिए लोगों के बीच. And in fact, basically what this structure is designed to allow the reorganization of reservations without reducing the current entitlements. Yes. Therefore, reiterating our point one more time, clearly there has been some kind of a miscommunication, which is why the protest happened. But Nabarun, news coming in just now is that the Dimasa Students Union have decided to protest against this particular decision, the government's decision, and December 3rd is the day when they are planning to hold their rallies. So now of course protests. Fine. There was this protest by Karbi students in Cotton University last Guwahati. evening. Right. So nobody is saying don't protest, but first understand what the government is doing. Maybe somewhere there was a little bit of lack of proper consultation also, maybe, which is why. And as far as the Boro Heartland is concerned, though Hagrama Mohilari is saying that he was never, like BPF was never part of the consultations, it was the UPPL, then if we take that to be the fact, then maybe somewhere UPPL should have conveyed all of the things properly to the community leaders and everybody there. And while all these consultations were happening, I am sure the government did inform the necessary leaders and communities, the organizations also, the tribal organizations and everybody, that this is the framework, the CM this is what is coming. Said that he spoke to the tribal Sangha at least 10 times. So if they now say that they are not aware of anything, then he has to speak to them once more and ask them why they are saying what they are saying at this moment. But definitely the need to sit very urgently with all the student bodies, student unions, and that will be the job of again the group of ministers, so the ministers assigned, so that this confusion can go, because see what happened in Kokrajhar is picking pace.
Yesterday it was Karbi students, now the Dimasa students, Karbi Yes. Anglong, Dima Hasao. Again, if there is something in BTR, it creates an unnecessary confusion, and at the same time, it also hurts the sentiments of those communities to which the recommendation has been made for granting of ST status. So, overall, this is not a good thing to happen in a run up to the polls. Hence, the need for immediate discussion on the same table, the salient features, it should be put forward how the structure is there. And of course, it has been said that the existing seats, existing equations will not be disturbed, just that in terms of numbers that needs to be placed on paper and showed to all the organizations, I think that will suffice. और लोगों को भी समझना होगा कि जब पिछली सरकारों ने आश्वासन दिया, ये सरकार कर रही है, तो लोगों की भलाई के लिए ही कदम उठाए जाएंगे. Yes, because everywhere, the terms of reference for the group of ministers, and everywhere the government has very clearly mentioned that they are very convinced that this step is necessary for the upliftment, empowerment, and to actually preserve the communities, their rights and privileges, and that is why, and the government, the center and the state government, they are committed for the well-being of every community. Therefore, they thought about giving the status to these particular 6 communities as well, and they have been demanding this for the longest. Very interesting how this is taking care of the interests of the existing STs. The probation also says the group of ministers have also recommended that Lok Sabha constituencies covering the 6 scheduled areas be permanently reserved for the existing STs. Yes. Through a constitutional STs amendment, so hills that and plains, these yes. seats remain reserved regardless of any future delimitation. Correct. So, yeah. Therefore, government has taken all necessary safeguards. They have taken into account all that might actually happen when they go ahead and grant this status to the additional 6 communities. I am sure things will get more clearer once several rounds of consultations happen again, despite so many rounds already taking place, and people will see the merit in the government's decision. Absolutely. So, to sum it up, the ST Valley will be scheduled tribe for all practical purposes, except that it will not affect the rights and privileges enjoyed by the existing tribal communities. That is also clear in this GOM report that has been recommended to the center. Yes, there is a little bit of confusion and apprehension, there are protests and there are concerns. The Assam government under the leadership of Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sharma will definitely have to reach out to all those who are opposing this move right now, immediately rather, so that these protests don't spiral, there are no more protests and these protests don't get bigger. Of course, it's in the run up to the elections, and the opposition also has the right to raise its concerns, but no misinformation should be spread, because this is we are not saying that anyone is spreading misinformation, mind you. It's an appeal that no misinformation should be spread, because this is a very, very sensitive issue. There are livelihoods involved, there are rights of people, communities involved, and the Assam government has assured that the rights and privileges of the existing ST communities will remain untouched. They have to now get back again to the talking table and get all the student groups and the tribal bodies and explain things to them, so that things are clear probably in the next 1 week or so. That's a wrap of the in-house debate this evening.